This is the last video of the anesthesia crash course. In this crash course, the target was to complete anesthesia in 4 videos. This is the last part. As this is the last part, this is going to be a long video. Also, many short but important topics have been covered. So please follow this to the end. First, let us start with the IV cannula. 2 things have to be remembered here. What is the color of the IV cannula and what is the needle size? And where will you use this? Because जब इतने सारे different type of cannula है, obviously सबका use भी अलग होगा, तभी इतना सारा cannula बनाया गया है. So you can remember this by the mnemonic. O grey God, please bless your people. The starting letter of each word will tell you the color. O, orange. Grey, G stands for grey itself. God ka grey is green. Please, P for purple. Bless, B for blue. Your, Y for yellow. And P for purple. So, O grey God, please bless your people. Orange, grey, green. Pink, blue, yellow, purple. How to remember the needle size? Start with 14. And with every color you increase 2. 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. Now come to the use. The smallest gauge needle, that is orange one, having 14 gauge size, is used in the patients of shock. Grey is also used in patients of shock. Now green and pink, you will use this for anesthesia. Green you will see are used in the patients who are taken for surgery, and pink you will see are used in medicine wards for giving IV fluids. Also remember it is used for anesthesia. Now the blue and the yellow gauge needle are used in pediatric cases. So this is about the IV cannula. Next topic that we will study are the airway devices. So this is categorized into 2 categories. Supraglottic airway device and infraglottic airway device. As the name says, supraglottic, that means this airway is fitted above your glottic region. Supra means above, glottic region, above the glottic region. And infraglottic airway devices are the devices which are placed below the glottic region. So laryngeal mask airway is a supraglottic airway device and endotracheal tube intubation is an infraglottic airway device. Now obviously if something is going below your glottis, that is a definitive airway device because it is sure that the airway will go into it is sure that the airway device will go into the airway because it is placed in the infraglottic region. So ETT is the definite airway disease. And it is also the best method to secure airway. Then the question arises, if this is the best, what was the need of a supraglottic airway device? What was the need of a laryngeal mask airway? So these are the conditions when we have to use a LMA. 1, if there is failure to intubate. If you cannot provide something in the infraglottic region, you have to use a supraglottic device, so failure to intubate. 2nd, if it is a difficult surgery where intubation is not possible. And 3rd, if it is a minor surgery. If it's minor, why will you take the burden of putting something in the infraglottic region? Just use a supraglottic device. So if there is failure of intubation, if it's a minor surgery, and if it's a difficult airway, because some airways are really small, you cannot actually put the airway inside the infraglottic region. So in that case also, you will use the supraglottic airway device like laryngeal mask airway. Now some points about LMA, that the size of LMA depends upon the weight of the patient. If we talk about adults, then 50 to 70 kg patient, you will use size 4, and 70 to 100 kg patient, you will use size 5. The actual size starts from size 0, which is used in neonates. Then as you go to size 1, you will use that in children. You go to size 2, you will use that in adolescents. And size 3, young adults. And size 4, 50 to 70, that is late adults. And size 5 is old age, 70 to 100 kg. There are some generations of LMA, that is generation 1 and generation 2. What is generation 1 LMA? That is the classic LMA. Okay. And generation 1 has only 1 port, and that is inserted into the trachea. Generation 2, you have 3 examples, that is ProSeal LMA, Supreme LMA and Fast Track LMA. What is the difference of generation 2 with generation 1? 1 may 1 port, 2 may 2 ports. So 2 ports kahan jayega? 1 port will go into the trachea and the second port is for the Ryle's tube insertion to deflate the stomach. If you want to deflate the stomach, we will put another port in the Ryle's tube for inserting it. Now the supraglottic airway device, that is LMA, is done. We will move on to the infraglottic airway device, that is ETT, that is endotracheal tube intubation. Endotracheal tube intubation, which means एंडो मतलब अंदर, तो ट्रेकिया के अंदर हम एक ट्यूब डाल रहे हैं, ठीक है. सो फॉर डूइंग ईटीटी यू हैव टू नो द पोजीशन ऑफ द पेशेंट जिस पे आप ईटीटी कर सकते हो. खड़े होकर पेशेंट को ईटीटी नहीं कर सकते, ठीक है, तो वैसा पोजीशन जानना पड़ता है. सो नॉर्मल पेशेंट शुड बी इन अ स्निफिंग air posture. What is this posture? This is something in which there is extension at the atlanto-occipital joint and the flexion at the cervical spine. Okay. Now a question arises, why this kind of position? So this position is important because we want our oral axis and the pharyngeal axis to come in the straight line. हमारा oral cavity हम चाह रहे हैं कि air directly pharynx में जाए, वो दोनों एक straight line में आ जाए, इसीलिए हम लोग extend करते हैं atlanto-occipital joint को, flex करते हैं cervical spine को. Okay. In case of obese patient, what you do is that you have to place a pillow below the process अंडर द हेड एंड द अपर बॉडी. तो हेड और अपर बॉडी के नीचे में एक पिलो ले आओ, वो रैम्पेट पोजीशन होता है, वो ओबीस पेशेंट के लिए किया जाता है. एंड द टारगेट इज द सेम, दैट वी वांट द ओरल पाथवे एंड द pharyngeal pathway to be in a straight line. Now what is the procedure? So first of all, you will have to keep the patient in a proper position. Okay. Then you will insert the laryngoscope. Now how to insert the laryngoscope? You will lift the patient of the tongue and insert the laryngoscope and also lift the epiglottis. Okay. Now when you have
lifted the laryngoscope, then you have to do something which is called as Cormack-Lehane grading. Okay. Now, before moving on to this grading, the types of laryngoscope that you can use are three types: Miller's, Mackintosh, and video laryngoscopy. Miller's laryngoscope is a straight laryngoscope that you will use in child, but a Mackintosh laryngoscope is a curved laryngoscope that you will use in adults. And for a more technical purpose, you can use video laryngoscopy. ठीक है, तो आपने laryngoscope को इंसर्ट कर दिया. इंसर्ट करने के बाद आपको कुछ कुछ स्ट्रक्चर्स तो दिखाई देंगे. For that only we have this Cormack-Lehane grading. Now this grading is divided into 4 grades: grade 1, grade 2, grade 3 and grade 4. What is grade 1? Grade 1 is that when the entire laryngeal aperture is seen. Grade 2 is what? When you can see only the posterior portion of the laryngeal aperture. What is grade 3? Grade 3 is only epiglottis can be seen, and grade 4 is nothing is visible. So जब आपने laryngoscope घुसाया, आपको पूरा laryngoscope aperture दिखा, true vocal cords, false vocal cords, epiglottis, rhima glottis, सब कुछ दिख रहा है. That is grade 1. Grade 2 only the posterior part can be seen. Grade 3 only epiglottis will be seen. And grade 4 में तो कुछ भी नहीं दिखाई देता है. Now what is the significance of this Cormack-Lehane grading? The significance is that you can understand whether this airway is patent enough, is suitable enough for endotracheal intubation. अगर space बहुत ज़्यादा ही कम है, तो आप ETT नहीं कर सकते, and then you have to go for SMA. Okay, sorry, LMA, that is supraglottic device. Okay, now you have done the grading. The space is good enough. What will you do now? Now you will insert the ETT. Okay, where you have to insert the ETT? Up to the trachea. Okay, no, you have to insert the ETT in the trachea because endotracheal intubation मतलब एक ट्यूब हम लोग ट्रेकिया में घुसा रहे हैं, तो हम लोग को ट्रेकिया में ट्यूब को घुसाना है. अब the next question is how much of the tube to be inserted into the trachea, and after the tube has been inserted, what to do? For that, we have to study the parts of ETT. So this is the diagram of ETT. You can see that there is a beveled end, there is a cuff, and there are 2 markings on the tube. What is the importance of the cuff? So cuff pressure maintain करके रखता है. कितना pressure? It is 15 to 20 mmHg or 25 to centimeter of H2O. Okay. There is a Murphy's eye just before the cuff. What will it do? This Murphy's eye is basically an alternate pore for ventilation if the tracheal secretions have blocked the main part. मैंने आपने ट्यूब को घुसाया, ट्रेकिया में घुसाया, tracheal secretions अगर इस मेन ट्यूब को ब्लॉक कर दी हैं, so this Murphy's eye will provide extra pathway for ventilation. Okay. अच्छा, what are the importance of these 2 markings? These 2 markings will only tell कि ट्यूब को कितना घुसाना है एयरवे के अंदर. So basically there are 2 markings. One marking should be above the vocal cord and the other marking should be below the vocal cord. मतलब जो मेन पार्ट है वो इन दोनों मार्किंग्स के बीच में आना चाहिए. Clear? And what is the correct position of the ETT? It is to be placed 3 to 4 centimeter above the carina. Carina is the bifurcation of the bronchus. So 3 to 4 centimeter above हम लोग को ETT को रखना है. इस तरह से रखना है कि एक मार्किंग जो है वो vocal cord के ऊपर है, जो दूसरा मार्किंग है वो vocal cord के नीचे है. Okay. So first question is done that कितना ट्यूब को घुसाना है. Second question or the second problem that we can have कि ट्यूब घुसाने के बाद क्या करना है. So you have to confirm whether your tube has gone into the trachea or not because you can't see anything. It's a blind procedure. So ये check कैसे करेंगे? There are certain methods by which we can check. First is auscultation. If you put your stethoscope on the lungs of the patient, if you are able to hear the breath sounds, that means वो सही जगह पे गया है. So auscultation is one method. That is actually a clinical method. What else you can do? You can see the systemic rise of the chest wall. जैसे normal patient breathe अगर करता है, दोनों part of the chest wall systemically rise करते हैं. So if you see a normal thing, which means endotracheal tube normal position में गया है. Now the best method to check if the endotracheal tube has gone into the trachea or not is to do a capnography. Capnography is basically a test that will measure the amount of exhaled carbon dioxide. So that has to be done. If all these 3 things, auscultation, symmetric rise of the chest wall, and capnography is good enough, that means endotracheal tube जो process आपने किया है वो सही है. Before moving on to capnography, which is an important topic, we have to study the different types of endotracheal tube. This was the basic idea which I have given. There are other types also, और हर एक type का कुछ एक importance है. Like there is a raised tube, RAE, raised tube. There is a red rubber tube. There is a double lumen tube. There are polyvinyl chloride tubes, and there is a flexo-metallic tube. What is RAE tube? This is basically a nasopharyngeal tube for oral pathology, and it starts for right angled endotracheal tube. It is used for oral pathology. Now, red rubber tube क्या होता है? First of all, red rubber tube is not used nowadays. Okay, why? Because it can cause injury to the tracheal mucosa. And why does it cause injury to the tracheal mucosa? Because इसका pressure बहुत ज़्यादा होता है. Pressure ज़्यादा होता है, volume कम होता है कफ का, so it will cause injury to the tracheal mucosa, and that is why we don't use this tube. Then third is the double lumen tube. This is used for surgeries which require one lung ventilation. So basically double lumen tube में बहुत बड़ा उसका lumen होता है. You insert it not only to the trachea up to the lungs. ठीक है, पूरे एक लंग्स में उसको घुसा देते हैं, तो उसी लंग पाथवे को हम पेटेंट रखते हैं, दूसरा लंग इन्वॉल्व नहीं करता है. तो ये कब करेंगे? When we are doing one lung ventilation. ठीक है. PVC tubes are the best tubes which are used nowadays. तो उसका प्रेशर कम होता है, उसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है कफ का. Now, the flexo-metallic tube, this is done or this is used when we have any surgeries in the prone position. Okay, the images of these tubes are really important, so I will try to give them here, or you can just Google them and see them. Okay. Now we will move on to capnography. So capnograph, as I told you, it is a graph that will measure the exhaled amount of carbon dioxide. Okay, this is a normal capnograph in which we have 4 phases: phase 1, phase 2, phase 3, and phase 0. Phase 1 starts for dead space ventilation. Phase 2 is the
expiratory upstroke. Phase 3 is the alveolar plateau, एक straight line दिख रहा है, and phase 0 is the inspiratory downstroke. तो ये dead space ventilation हुआ, ये upstroke है लेकिन expiration में, ये एक alveolar plateau है, ये downstroke है inspiration में. So there are two angles if you note, alpha angle, beta angle. Alpha angle is the angle between phase 2 and phase 3. Beta angle is the angle between phase 3 and phase 0. Importance is of the beta angle because it measures the exhaled amount of carbon dioxide. जो capnograph का काम है वो beta angle देख के ही होता है. Normally the exhaled amount of carbon dioxide is a pressure of 35 to 45 mmHg. उसी को नोट करके हमें conclusions निकालना है कि ग्राफ होगा कैसा. So this is a flat graph, ठीक है. So flat graph हमें क्या बता रहा है कि exhaled amount of carbon dioxide बहुत ही कम है या है ही नहीं, तभी तो flat graph आ रहा है. वो कब हो सकता है? वो तब हो सकता है when patient is having cardiac arrest, जब वो ब्रीथ ही नहीं कर रहा है तो exhaled amount of carbon dioxide आएगा कैसे? वो तब हो सकता है जब आपका endotracheal tube जब insert किया हो that is not in the right place, वो ट्रेकिया में गया ही नहीं है तो air को measure करेगा कैसे? So these are some things when the EDP is not in the trachea, it is in esophagus, when the trachea is blocked, secretion से blocked है, air है ही नहीं ट्रेकिया में. And third cardiac arrest. Second abnormal graph is this one, in which you have a sharp beat B angle. When can this happen? This can happen in bronchospasm, in COPD, and bronchial asthma. Okay. The third graph is this one. This is basically a step ladder capnograph. देखो ये छोटा staircase है, फिर ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा. This is a step ladder capnograph, and this occurs in malignant hyperthermia. Why so? Because this is stating that धीरे-धीरे the exhaled amount of carbon dioxide is gradually increasing. Okay. Then you have this graph, which does not start from a zero level, but it starts some level above the baseline. When does this happen? This happens in exhausted soda lime. So normally क्या होता है? Soda lime एक substance है जो carbon dioxide को absorb कर लेता है. But when this soda lime has been exhausted, मतलब खत्म हो गया, it will not absorb the CO2. Okay, which means that some amount of CO2 is already retained in the ETT. तो अगर पहले से ही carbon dioxide है तो zero से तो obviously start नहीं होगा ना. Okay, then is the decreasing curve. See here the graph is gradually decreasing. This occurs in venous air embolism, and this venous or it can also occur in Fowler's position, जो कि neurosurgery में position होता है. और अगर patient sitting position में है और उसको हम लोग ETT किए हैं, then also you will see that the graph is slowly decreasing. Okay, now in case this is an MCQ question that VAE में venous air embolism में what is the best investigation? So the best investigation is actually a TEE. VAE में TEE is the best investigation. What does TEE stands for? It stands for transesophageal something. Okay, and in case of VAE, it will produce a murmur which is called as windmill murmur. So these are the two questions. Windmill murmur associated with VAE and TEE is the best investigation for VAE. Okay, the last graph that you have to see are these two curves. So अगर notch हो गया, अगर आपके plateau phase में एक notch present है, what does this mean? This means that there is return of spontaneous ventilation. तभी तो notch आया है. Okay. And this is the last curve in which you will see that there is increased amount of exhaled carbon dioxide. तो देखो ग्राफ normal time से लंबा है. ये कब हो सकता है? This happens when there is more number of breaths. अगर patient बहुत बार hyperventilate कर रहा है, ठीक है, उसको करना चाहिए 1 minute में 12 to 20 times. He is doing let's say 40 times. बहुत ज़्यादा ventilate कर रहा है, तो ज़्यादा carbon dioxide निकलेगा, तो ग्राफ जो होगा वो बड़ा होगा. Now this is the third last topic of the video. The three topics that we are left with is anesthesia machine, which we will be discussing now. Second one is the ventilator, and third is the airway devices, oxygen, basically oxygen devices. Now anesthesia machine is a very important part because we are studying anesthesia. So anesthesia machine is also called as a Boyle's machine or a continuous flow machine. ठीक है, Boyle's machine and a continuous flow machine. So before studying the anesthesia machine, एक algorithm समझना पड़ता है, and the algorithm is that suppose you have ordered a product from a market. Okay, that product from Amazon. Let's say you have ordered a product from Amazon. Okay. अब एक shop होता है, बीच में Amazon होता है, and you are the customer. So similarly, there is a source, there is an anesthesia machine, and there is a patient. Source को पकड़ लो shop, anesthesia machine को ले लो Amazon, and patient is you, that is the customer. So first of all, there is some connection between the shop and the Amazon. Shop अपना products Amazon को देगा. Similarly, source की जो product होता है, मतलब anesthetic devices हुआ या oxygen हुआ, जो भी है, वो anesthesia machine को देता है, with the help of a सिलेंडर और सेंट्रल सप्लाई. ओके, विल कम टू दैट लेटर, बट ये समझ लो कि सोर्स ही अपना चीज है, एनेस्थेशिया मशीन को दे रहा है. एनेस्थेशिया मशीन खुद एनेस्थेटिक डिवाइसेस, एनेस्थेटिक ड्रग्स या ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करता है. देयर इज सम सोर्स एंड दिस सोर्स इज ओनली सिलेंडर और सेंट्रल सप्लाई. ओके, अब अमेज़न क्या करेगा? अमेज़न ट्रांसपोर्ट की मदद से वही प्रोडक्ट हमें कस्टमर को देता है. सो एनेस्थेशिया मशीन विल यूज सर्किट्स टू सप्लाई दीज एनेस्थेटिक प्रोडक्ट्स और ऑक्सीजन टू द पेशेंट. सो इज इट क्लियर? सो एक सोर्स है विच इज बेसिकली अ सिलेंडर और सेंट्रल सप्लाई, वो अपना प्रोडक्ट्स एनेस्थेशिया मशीन को देगा. एनेस्थेशिया मशीन विद द हेल्प ऑफ सर्किट्स अपना प्रोडक्ट्स पेशेंट को देगा. ओके, नाउ दिस एनेस्थेशिया मशीन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय एडमंड गैशविन बॉयल. ओके, इसीलिए इसको हम लोग बॉयल्स मशीन भी बोलते हैं. इन विच ईयर? इन द ईयर 1917. We have to study the different parts of anesthesia machine, and these parts are divided into three categories: high pressure part, intermediate pressure part, and low pressure part. High pressure में क्या क्या चीजें आती है? There is a cylinder which is a high pressure part. Cylinder मतलब वही जो source है. There is a pressure gauge, there is a yoke valve assembly, and there is a pressure releasing valve. For now, just remember the names. When we come to the diagram, it will be more clear. Then there is an intermediate pressure part, जिसमें एक flow central tube होता है,
there is oxygen fluids, there is a central supply, and lastly there is the low pressure system. जिसमें एक rotameter है, there is a vaporizer. Okay, now this is the schematic diagram of anesthesia machine. See, बाहर में एक cylinder है. This cylinder is connected to anesthesia machine, and the first part here is the yoke valve assembly. ठीक है? After this yoke valve assembly, we have the pressure reducing valves. These are the pressure reducing valves. This is connected to 3 knob-like structures, and these knob-like structures open into the columns. These columns finally connect to this tube which has the vaporizer, and this is the exit part. ये exit part ही circuit से connect होगा जो patients पे दिया जाएगा. So बाहर में एक cylinder है. This is the yoke valve assembly, which ensures that the right amount of cylinder is connected to the right tube. मतलब क्या कि अगर एक ऑक्सीजन सिलेंडर है तो उसको हम लोग एक कार्बन डाइऑक्साइड के ट्यूब के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते हैं. एक ऑक्सीजन सिलेंडर को ऑक्सीजन ट्यूब के साथ ही कनेक्ट करना पड़ेगा, तभी वो फंक्शन होगा. सो योक वाल्व असेंबली हैज दिस रोल टू इंश्योर दैट द राइट cylinder has been connected to the right amount of tube. Okay, right part of the tube basically. This is the pressure reducing valve. I told you that there are 3 pressure systems. तो high pressure को कम करना होगा intermediate pressure में, intermediate pressure को कम करना पड़ेगा low pressure में. So all throughout this anesthesia machine, you will have some pressure reducing devices which are called as pressure reducing valves. Okay, this is connected to a knob for the same purpose कि अगर ये ट्यूब है तो ये ट्यूब को सही अमाउंट ऑफ या सही कॉलम के साथ कनेक्ट करना है. द सिमिलर वे कि ऑक्सीजन ट्यूब को आप कार्बन डाइऑक्साइड कॉलम के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते, ऑक्सीजन ट्यूब को ऑक्सीजन कॉलम के साथ ही कनेक्ट करना पड़ेगा. सो दिस नॉब इज द सर्विंग द सेम पर्पस. This is the FCT, that is flow control tubes. Okay, now this total thing, the knob, the flow control tube, and there are some bobbins in the flow control tube. ये तीनों चीज को रोटामीटर बोलते हैं. Why so? Because rotameter will rotate and only then they will supply the anesthetic products or oxygen in the forward direction. ठीक है? So knob, flow control tube and bobbins को हम लोग together बोलते हैं rotameter. Then you have this tube जहाँ पे vaporizer होता है and the exit part. Okay. Now let's discuss about the cylinders. Cylinder is made up of 2 substances, either molybdenum or aluminium. Now the molybdenum cylinders are non-MRI compatible and the aluminium cylinders are MRI compatible. Okay. There are color codings in the cylinder. आप सर्जरी रूम में जाओगे, you will be able to see there is a black cylinder, there is a blue cylinder. What does this mean? So black body cylinder with a white shoulder, मतलब पूरा सिलेंडर का बॉडी इज ब्लैक, ऊपर में द कैप पोर्शन के अराउंड इज व्हाइट, दैट इज ऑक्सीजन सिलेंडर, मतलब ऑक्सीजन स्टोर करके रखा है. जो N2O सिलेंडर होगा वो ब्लू कलर का होगा, फुल ब्लू. देयर इज एंटोनॉक्स सिलेंडर. एंटोनॉक्स इज अ सब्सटेंस व्हिच इज 50% N2O 50% ऑक्सीजन. मतलब ये कुछ कलर N2O का लेगा, कुछ कलर ऑक्सीजन का लेगा. सो N2O के जैसा उसका ब्लू बॉडी होगा, लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर की तरह उसका व्हाइट शोल्डर होगा. ओके. नाउ हीलियम विल बी अ ब्राउन कलर सिलेंडर. साइक्लोप्रोपेन इज अ ऑरेंज कलर सिलेंडर. हैलोथेन इज अ रेड कलर सिलेंडर. एयर का सिलेंडर क्या होगा? एयर इज न्यूट्रल, एयर इज ब्लैक एंड व्हाइट, सो एयर इज व्हाइट बॉडी, ब्लैक शोल्डर, एंड CO2 इज अ ग्रे कलर शोल्डर. So these 6 colors or 7 colors which I've told are very important. Oxygen, black body, white shoulder, N2O, blue, Entonox, blue white mix, helium brown, cyclopropane orange, halogen red. Okay, साथ में air और carbon dioxide. 8 cylinders are very important. Now, this Entonox is actually used for analgesics. Okay, ये कोई anesthetic काम नहीं करता है Entonox. वो analgesia अगर देना होता है patient को, then we use Entonox cylinder. Next, I told you that this cylinder is connected to the yoke valve assembly to ensure that the correct cylinder is attached to the correct tube. So this yoke valve assembly basically has pins. Okay, so holes are present on the cylinder and pins are present on the machine. So there are holes on the cylinder and pins on the machine. That is what I'm trying to say, that yoke valve assembly, one part of this assembly is having a pin index system that will prevent the wrong attachment of the cylinder to the tubes. Okay, so हर एक गैस का एक particular pin index system होता है, like air. Now air stands for A. A is the first letter of the alphabet. इसलिए A को आप याद रख सकते हो 1 की तरह. So 1 is the number donated to air. Oxygen O2. So 2 is the number given for oxygen. Now N2O. अब N2O में कितने atoms है? 3 atoms. तो याद रखो 3 is the number given to N2O. And all these will have 5 also. So air is 1 5, oxygen is 2 5, and N2O is 3 5. Okay. अब Entonox. Entonox में 7 letters होता है. So you can remember that 7 is the pin index for Entonox. Okay. जस्ट 2 अलग से आपको याद रखना होगा. एक है कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज 1 6 and 2 6, एंड हीलियम दैट इज 2 4. ओके, सिर्फ ये याद रखना है, बाकी तो सब याद रह जाएगा. तो CO2 इज 1 6 2 6, हीलियम इज 2 4. ओके, नाउ कम टू द सेंट्रल सप्लाई. सिलेंडर पढ़ लिया हमने, एक सोर्स हो गया. दूसरा सोर्स होता है सेंट्रल सप्लाई. व्हेन डू यू यूज सेंट्रल सप्लाई? जब आपका लोकल चीज खत्म हो जाता है तभी तो हम लोग सेंट्रल में जाते हैं. सिमिलरली अगर सिलेंडर खत्म हो गया है तो हम लोग को सेंट्रल सप्लाई में जाना पड़ेगा. नाउ इट ऑल्सो विल हैव अ सेफ्टी सिस्टम दैट विल इंश्योर that wrong attachment of the pipe is not done with the anesthesia machine. Okay. Now central supply has a non-interchangeable connection and the pressure is 60 psi.
So from the anesthesia machine, what we have discussed cylinders, we have discussed yoke valve assembly, and we have discussed central supply. Also, I have told you the function of the rotameter. I've also told you the function of the knobs, the flow control, the pressure reducing valves. Now the next thing that we move on to is the vaporizer, which is again important part. Vaporizer किससे बना होता है? Vaporizer is made up of copper. Okay. What is the use of vaporizer? It will store the liquid volatile inhalation agents. Cylinder and central supply is providing you with air, मतलब gases in particular. Now, who will provide as the inhalation agent? Vaporizer. Okay. Now, there is a special vaporizer for desflurane, which is known as the TFC6 vaporizer. And why we have special something for desflurane? Because it has a low boiling point. इसलिए हम लोग को एक special vaporizer use करना पड़ता है. Now, as I told you that vaporizer will store the inhalation agents. So, उसके लिए भी एक particular color होता है. मतलब कौन से inhalation agent के लिए कौन सा color का vaporizer है, that is important. Halothane is stored in red color vaporizer, isoflurane in purple, sevoflurane in yellow, and desflurane is stored in blue. Okay. Third thing that we move on in the anesthetic machine are the circuits. मतलब अब exit हो गया है आपका ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या जो भी गैस है, exit हो रहा है आपका inhalation agent, पेशेंट को देना है आपको, तो circuits होता है. So now we'll study about circuits. There are three types of circuits: open circuit, semi-closed circuit, and closed circuit. Most importantly जो use होता है, most commonly जो use होता है, that is semi-closed circuit, which is also called as the Mapleson circuit. Now, first let's study about open circuit. Open मतलब क्या? Open मतलब इसमें कोई पाइप नहीं है. So gases are given without pipe. Okay. How are gases given without pipe? With the help of mask. तो जो mask होता है इसको हम बोलते हैं Schimmelbusch mask. This is the name of the mask. Now what is the disadvantage? Disadvantage है you cannot know the exact amount of gas that has been given. Okay? Because कोई पाइप तो सिस्टम है नहीं जो मॉनिटर कर रहा है कितना गैस जा रहा है, कितना inhalation agent जा रहा है. So you cannot measure it. Okay. Last we have the closed circuit. So closed क्यों बोलते हैं? Because ये पूरा एक जो circuit होता है वो एक circle form में होता है और वो हर एक पॉइंट पे क्लोज होता है. मतलब यू स्टार्ट फ्रॉम वन पॉइंट, यू विल कम बैक टू द सेम पॉइंट. सो इट इज क्लोज्ड एवरीवेयर, इसलिए इसको क्लोज सर्किट बोलते हैं. देयर इज नो एक्सपिरेटरी वॉल्व इन दिस क्लोज सर्किट. और जो भी CO2 अब्सॉर्ब हो रहा है, मतलब जो भी CO2 प्रोड्यूस हो रहा है वो अब्सॉर्ब भी हो जाता है, मतलब कुछ बाहर नहीं जाएगा. राइट, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड दिस क्लोज सर्किट. सो CO2 अब्सॉर्ब करेगा कौन? CO2 प्रोड्यूस तो हो गया, लेकिन अब्सॉर्ब कौन करेगा? सो इट कैन बी अब्सॉर्ब बाय टू सब्सटेंसेस, आइदर सोडा लाइम और पैरालाइम. सोडा लाइम का कंपोजिशन क्या है? 80% कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, 16% H2O, 3% NaOH and 1 to 2% of KOH and silica. Why silica is given? For hardness. Okay, just इसको पढ़ लेना proportion याद रखने के लिए. Now baraline is again CO2 absorbing substance which is 80% COH and 20% BOH. ठीक है. Now in case of soda lime, what are the agents involved? Remember with the mnemonic or the word CTS. C is for chloroform, T is for trilene, and S for sevoflurane. And the agents with baraline can be remembered by the mnemonic DIE. D is for desflurane, I is for isoflurane, and E is for enflurane. Okay, now we'll study the most important circuit, most commonly used circuit, that is the semi-closed circuit of the Mapleson circuit. There are basically 6 types of semi-closed circuits which are named as A, B, C, D, E, F. Now let's see the A circuit. So this is the entry point of the free gas. This is the container or the bag where the anesthetic device substances will be stored, either gas or inhalation agent. This EV is the expiratory valve. And this is the P which is connected to the patient, P for patient. Okay. Now in B and C circuits, you will see that both the fresh gas and the expiratory valve is close to the patient. Whereas in case of A, only the expiratory valve was close with the patient, but the free gas was away. B और C में दोनों ही यहाँ पे है. A में free gas away, expiratory valve पास में. What happens in D? Expiratory valve is away, but fresh gas is close to the patient. And E and F are valveless circuit, इसमें expiratory valve होता नहीं है. Okay. Most commonly used out of these 6 circuits are Mapleson A and Mapleson D. मतलब एक ऐसा सर्किट जिसमें expiratory valve पास में है, that is in A, and D जहाँ पे free gas और fresh gas पास में है. Okay. So you have to know कि कौन सा सर्किट कहाँ पे यूज होता है. Now Mapleson A circuit is also called as the Magel circuit. This is used when we have to give spontaneous ventilation to the patient. ऐसा नहीं है कि कंट्रोल वेंटिलेशन आप नहीं दे सकते, लेकिन अगर पेशेंट को स्पॉन्टेनियसली वेंटिलेट करना है, यू यूज और प्रेफर Mapleson A. Okay. और जो उसमें फ्रेश गैस फ्लो होता है स्पॉन्टेनियस वेंटिलेशन में, जो हम Mapleson A के थ्रू प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट इज जस्ट मिनट इनटू वॉल्यूम. मतलब मिनट वॉल्यूम में प्रोवाइड करना है. मतलब अगर 1 मिनट में पेशेंट 12 टाइम्स ब्रीथ कर रहा है और हर ब्रीथ में 500 ml है, मतलब 6 लीटर उसको प्रोवाइड करना है, तो स्पॉन्टेनियस वेंटिलेशन में 6 लीटर प्रोवाइड होता है थ्रू Mapleson A सर्किट. और अगर कंट्रोल वेंटिलेशन है, देन दैट इज 1.8 into 2 times the minute ventilation. Okay. What is Mapleson D circuit? This is also called as the Bain circuit. Bain circuit. What is it used for? It is used for control ventilation. अगर एक पेशेंट है उसको स्पॉन्टेनियसली वेंटिलेट करना है, प्रेफर करो Mapleson A. कितना फ्रेश गैस फ्लो देना है? मिनट वेंटिलेशन देना है. अगर कोई पेशेंट है जिसको कंट्रोल वेंटिलेशन पे है, कौन सा सर्किट प्रेफर करेंगे? Mapleson D सर्किट, डी प्रेफर करेंगे. और उसमें कितना हम लोग को देना होता है? फ्रेश गैस फ्लो 1.6 into the minute ventilation. ओके.
Begin with ventilators, which is the second last topic of the anesthesia crash course. So you have to understand कि हमें patient को ventilator पे कब रखना है. So there are certain conditions. Perform the EBG of the patient, that is arterial blood gas, and look for certain parameters. कौन कौन सा parameters देखना है? Partial pressure of oxygen. If that is less than 50 millimeter of mercury, see the partial pressure of carbon dioxide. If that is more than 50 millimeter of mercury, if the PO2 by FiO2 ratio is less than 300, अगर ABG से ये सब कुछ एक आता है, then that becomes an indication for ventilation. और क्या कर सकते हो? You will do a pulmonary function test. If you see that the respiratory rate is more than 35 times per minute, if the tidal volume is less than 5 ml per kg, and if the vital capacity is less than 15 ml per kg, these are also the indications of ventilation. Now, ventilation are mainly of two types. One is pressure control and second one is volume control. Pressure control मतलब क्या? कि particular pressure set कर दिए और volume ऊपर नीचे हो रहा है. Volume control मतलब क्या? वॉल्यूम पर्टिकुलर सेट कर दे कि वेंटिलेटर ये इतना ही वॉल्यूम सप्लाई करेगा और प्रेशर ऊपर नीचे होता है. सो देयर आर सर्टेन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ आइदर टाइप. सोचो, इफ प्रेशर इज कंट्रोल्ड एंड वॉल्यूम कैन बी चेंज्ड तो क्या होगा? फायदा क्या होगा कि बेरोट्रॉमा नहीं होगा, बिकॉज वन प्रेशर इज फिक्स्ड. तो हाई प्रेशर से बेरोट्रॉमा हो सकता है, वो होने का चांस नहीं है. बट प्रॉब्लम, व्हाट विल बी द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम कैन बी हाइपोवेंटिलेशन और हाइपरवेंटिलेशन, बिकॉज वॉल्यूम चेंज हो रहा है. सिमिलरली, इफ योर वॉल्यूम इज फिक्स्ड बट प्रेशर कैन चेंज, सो इफ इट गोज टू हाई प्रेशर इट कैन कॉज बेरोट्रॉमा. लेकिन क्योंकि वॉल्यूम फिक्स्ड है तो हाइपोवेंटिलेशन हाइपरवेंटिलेशन का चांस नहीं होता है. Now come to the modes of ventilation. There is CMV, there is assisted control mode, there is synchronized intermediate mandatory ventilation, there is inverse ratio ventilation, APRV, prone position ventilation. Let us see one by one in details. CMV, that is controlled mandatory ventilation. इसका मतलब क्या? कि जो ventilation है patient का वो controlled है by the ventilator. और mandatory क्यों बोल रहे हैं? Mandatory इसलिए बोल रहे हैं, suppose we set the ventilator at X breaths per minute. तो it is mandatory that the ventilator will provide X breaths per minute to the patient. ठीक है? तो मतलब शॉर्ट में अगर समझे, then the whole ventilation या breathing of the patient is controlled by the ventilator. Patient खुद कुछ नहीं कर रहा है. There is no respiratory effort by the patient. Everything is controlled by the ventilator. This is also called as positive pressure ventilation because the ventilation will provide only positive breaths. Okay. So इसका disadvantages क्या है? Disadvantage ये है कि हमेशा अगर positive pressure मिलता रहेगा तो इतना high pressure की वजह से barotrauma हो सकता है. Okay. This can also lead to decreased venous return and decreased cardiac output. Okay. Next is assisted control mode of ventilation. नाम से पता चल रहा है assisted. मतलब वेंटिलेटर कंट्रोल तो कर रहा है पेशेंट का ब्रेथ, लेकिन एक असिस्टेड मैनर में. मतलब कि वेंटिलेटर अलाउज द पेशेंट टू ब्रीथ नॉर्मली. सपोज पेशेंट थोड़ा ब्रीथ कर पाया लेकिन उसको पूरा कंप्लीट करने का काम वेंटिलेटर का है. मतलब इट इज एक्टिंग लाइक असिस्टेंट, अ टीचर जिसको हेल्प करेगा टू कंप्लीट द एंटायर वेंटिलेशन प्रोसेस. You can see in this graph, this dot 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 is the patient's respiratory effort and this is given by the ventilator. Again patient respiratory effort ले रहा है, ventilator उसको assist करके पूरा कंप्लीट कर दे रहा है. Okay. So here triggered breathing is allowed by the patient and moderate sedation is also allowed, right? The third type of ventilation is synchronized intermediate mandatory ventilation. Why synchronized? Because the breaths of the patient are synchronized by the ventilator. Intermediate क्यों? Because जरूरी नहीं है हर ब्रेथ पे ही वेंटिलेटर वेंटिलेशन या ब्रेथ प्रोवाइड करे पेशेंट को. इट इज इंटरमीडिएट. जब वेंटिलेटर को लगता है कि अभी मुझे ब्रेथ देना चाहिए तब वेंटिलेटर देता है, नहीं तो नहीं देता. मतलब पूरा एक सिंक्रोनाइज्ड फैशन में वर्क करता है. एंड व्हाई मैंडेटरी? बिकॉज इफ यू हैव सेट द वेंटिलेटर टू गिव एक्स ब्रेथ्स पर मिनट, इट विल डेफिनेटली गिव एक्स ब्रेथ्स पर मिनट बट नॉट अ फिक्स्ड रेट. इट विल कंक्लूड बाय इटसेल्फ कि मुझे कब ब्रेथ देना है. फॉर एग्जाम्पल, पेशेंट अपना ब्रीदिंग कर रहा है, ठीक है. अगर प्रॉपर्ली ब्रीदिंग कर पाया तो वेंटिलेटर कुछ नहीं करेगा. अगर पेशेंट थोड़ा सा ब्रीदिंग एफर्ट दे पाया तो उसको कंप्लीट करेगा, और अगर पेशेंट कुछ भी नहीं कर पाया तो उसको पूरा देगा. सो इट इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ सीएमवी एंड असिस्टेड कंट्रोल मोड ऑफ वेंटिलेशन. ओके. नाउ इसको हम लोग वीनिंग मोड ऑफ वेंटिलेटर भी बोलते हैं. वीनिंग बाय बिकॉज कभी होता है कभी नहीं होता है, कभी होता है कभी नहीं होता है, राइट. द फोर्थ टाइप इज इनवर्स रेशियो वेंटिलेशन. नाउ नॉर्मली वी नो कि एक्सपिरेटरी टाइम ज्यादा होता है, इंस्पिरेटरी टाइम कम होता है. इनवर्स रेशियो में क्या हो जाएगा? इनवर्स कर दो. मतलब अब इंस्पिरेटरी टाइम ज्यादा है, एक्सपिरेटरी टाइम कम है. दिस इज डन व्हेन वी रिक्वायर हाई मीन आर्टेरियल प्रेशर. ओके. For example, in case of ARDS. Now, what is the fifth one actually? APRV, that is airway pressure release ventilation. Airway pressure release ventilation मतलब क्या? Here the pressure is maintained and released. ये देखो, एक particular level पे pressure set किया है, फिर release हुआ, फिर set किया, फिर release हुआ. Patient is normally taking its breath. लेकिन जो प्रेशर है वो ऊपर नीचे होता है बाय द वेंटिलेटर. एंड लास्टली इज द प्रोन पोजीशन वेंटिलेशन. नॉर्मली वेंटिलेशन में सुपाइन पोजीशन में करते हैं, लेकिन अगर पेशेंट अपने बेली के ऊपर सोया है, दैट इज द प्रोन पोजीशन वेंटिलेशन. नाउ इन केस ऑफ इमरजेंसीज व्हाट यू विल डू? यू रिक्वायर हाई फ्रीक्वेंसी वेंटिलेशन. तो हम लोग यूज कर सकते हैं हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटरी वेंटिलेशन, हाई फ्रीक्वेंसी जेट वेंटिलेशन. ओके. Now what is PEEP? PEEP is called as positive end expiratory pressure. मतलब क्या? कि at the end of expiration we are providing a positive pressure to the patient. Now why do we do this? क्योंकि हम लोग को पता है एक्सपिरेशन के टाइम पे एल्वुलाई कोलैप्स करता है, तभी तो लंग्स बंद होगा, तभी तो एक्सपायर करेगा. बट इफ वी वांट टू कीप द एल्वुलाई ओपन, देन हम लोग एक पॉजिटिव प्रेशर देते हैं एट द एंड ऑफ एक्सपिरेशन सो दैट एल्वुलाई बंद ना हो. व्हाट इज द एडवांटेज? एडवांटेज ये होता है कि गैसियस एक्सचेंज का टाइम बढ़ जाता है. अगर एल्वुलाई खुला रहेगा तो गैसियस एक्सचेंज होगा. बट व्हाट इज द डिसएडवांटेज? द डिसएडवांटेज इज दैट देयर इज डिक्रीज्ड वेनस रिटर्न, देयर इज डिक्रीज्ड कार्डियक आउटपुट, देयर इज डिक्रीज्ड ब्लड प्रेशर एंड देयर इज इंक्रीज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर. नाउ व्हेन डू यू यूज PEEP? यू यूज PEEP जब एल्वुलाई कोलैप्स हो जाता है, लाइक इन ARDS और इन केस ऑफ पल्मोनरी एडिमा. नाउ
PEEP can be given by a non-invasive method and invasive method. और अगर non-invasive method से इसको देते हैं तो हम लोग इसको CAP बोलते हैं, सॉरी CPAP बोलते हैं, ठीक है, CPAP. But there are certain side effects of PEEP. क्या साइड इफेक्ट्स है? हम लोग कंटिन्यूसली पॉजिटिव प्रेशर दे रहे हैं एट द एंड ऑफ एक्सपीरियंस, सो ज्यादा प्रेशर देने से क्या होगा? वेनर ट्रॉमा होगा. There is decreased venous return which will again cause वही hypotension, and there is VQ mismatch also, क्योंकि जितना खुला रहना चाहिए alveoli को उससे ज्यादा खुला रह रहा है, तो gaseous exchange ज्यादा हो रहा है, perfusion ज्यादा हो रहा है, तो VQ mismatch होगा. CPAP already told you, CPAP is actually PEEP that is given in a non-invasive method. Now what is BiPAP? BiPAP is पॉजिटिव एयरवे प्रेशर ड्यूरिंग बोथ साइकिल्स ऑफ रेस्पिरेशन. मतलब इंस्पिरेशन में भी हम लोग पॉजिटिव प्रेशर दे रहे हैं पेशेंट को, एक्सपिरेशन में भी पॉजिटिव प्रेशर दे रहे हैं. दैट इज कॉल्ड एज BiPAP, एंड दिस कैन बी यूज्ड बोथ फॉर इंट्यूबेटेड एंड नॉन इंट्यूबेटेड पेशेंट्स. The last topic that is left for anesthesia crash course are the oxygen delivery devices. Okay, now these are basically two types. एक हो सकता है low performance variable, low flow variable performance. एक हो सकता है high flow variable performance. Okay, under low flow variable performance you have nasal cannula, face mask and non-rebreather mask. And under high flow fixed performance you have high flow nasal cannula and venturi mask. Okay, now in all these devices you have to know कि कितना flow rate होता है और कितना FiO2 होता है. For example, nasal cannula will have 1 to 6 liter flow rate and 25 to 45% FiO2. Simple face mask, मतलब face mask 6 to 10 liter, 35 to 60%. Non-rebreather mask is 10 to 15 liter, 65 to 95% FiO2. Venturi mask, which works on the Bernoulli's principle, is 2 to 15 flow rate with 24 to 60 FiO2. And HFNC is 40 to 60 flow rate with 100% FiO2. Now, there is some colors also that you have to remember. ये specifically venturi mask के लिए होता है. मतलब venturi mask में you will see that there is a venturi meter. ठीक है, उसका color define करता है कि कौन सा गैस जा रहा है. If it's a blue color, that means okay, so you can also remember this by mnemonic. Boy was often yelling rem girl. Okay, boy was often yelling rem girl. B for boy, B for blue. W for white. O often O orange. Y yelling, Y yellow. Rem girl, R red. G green. And this is the corresponding oxygen and FiO2 that these venturi masks will supply. This is all about the anesthesia crash course completed in 4 videos.